Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Usama. तो वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल यूएफ रिएक्शन। तो गाइस आज की वीडियो बहुत जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो बहुत ही एक जबरदस्त किस्म की टॉपिक पे लेके आए हैं। उमर भाई आज का क्या टॉपिक है? आज का जो टॉपिक है जी, बांग्लादेश में अगर किसी ने विजिट करनी है, प्लेसेस जो खूबसूरत प्लेसेस है, वैसे तो बांग्लादेश में बहुत ज्यादा जो है वो प्लेसेस वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, नेचुरल ब्यूटी है वहां पे। लेकिन आज की जो वीडियो है वो उसका टाइटल है टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन बांग्लादेश। तो देखते हैं कि कौन सी टॉप 10 प्लेसेस हैं जो विजिट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और वहां पे विजिट करना चाहिए। तो पहले हम वीडियो देखेंगे, बाकी बातें बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पे जाने से पहले गाइस प्लीज मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आपको मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स वॉच द वीडियो, स्टे विद अस, here we go. In today's video, we'll be exploring the 10 best places to visit in Bangladesh. Bangladesh is a beautiful country in South Asia, bordering India and Myanmar. Tourism in Bangladesh is yet to really develop in this country. For that reason, people are generally surprised to see tourists, especially in the rural areas outside Dhaka. Welcome back to FTD Facts. I'm Sarah Carvalho, and in today's video, we'll be exploring the 10 best places to visit in Bangladesh to make for a memorable experience. So let's get right into it. Up at number 10, we have a place called Puthia. Puthia is a small village in Rajshahi full of beautiful Hindu temples. In fact, the largest number of historical temples in Bangladesh are found in Puthia, some of which are very well maintained. These temples are unique in design. Some of them are ornamented with beautiful terracotta plaques describing epic Hindu stories. This is a definite visit for history buffs. Up next, we have Barisal. Barisal is a unique Barisal part of the Ganges Delta. Life in Barisal is fully based on the river. The main attraction to visiting this area is to experience the unique life and culture of the people of this region. You can also visit its many floating markets, bazaars, schools, and villages to experience the unique way of life in Barisal. Monsoon season is usually the best time to visit this region when its numerous rivers and canals become full of water and the surrounding nature becomes very green. This is also the season for the floating guava markets, which make for a great tasting opportunity and photo op. Next on our trip, we take you to Sylhet. Sylhet, यार ये तो बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। Close to the Meghalaya state of India. It has many beautiful places to visit. Green Water Canal, Lalakal, Green the Water stone Canal collecting area, Jaflong, Ratorgul Swamp Forest, and its tea gardens are also many of the attractions that bring visitors. You can also see various tribal people in Sylhet, especially in Jaflong. For example, you can meet the Kasia tribal people who grow betel leaves in the forest. All right, up at number 7, we have Gaur. Gaur is a rural city from the ancient and medieval period located in the India-Bangladesh border. The city was in its prime time during the 12th to 14th century. It became the capital of the whole Bengal region and was a very rich and wealthy city in the medieval period, which was eventually abandoned. Very historical place लग रहा है मुझे। Some of the beautiful mosques of Gaur are still there today, hiding behind the lush mango orchards. The archaeological department of Bangladesh has done some amazing restoration work to some of these mosques, making this an amazing place to visit for history lovers. Let's talk about St. Martin's Island. St. Martin's Island is a beautiful Martin Island in the Bay of Bengal. For beach lovers, this is a must visit for you. Local tourists usually visit the island on a day trip. You can also choose to stay in a resort with its own private beach and relax on the island for a couple of days to catch up on the rest and relaxation component of any good vacation. And up at the halfway point in our video today, at number 5, we have Paharpur. In the northwestern part of Bangladesh, there is a little place called Paharpur, which holds the most impressive archaeological historical place called Somapuri Mahabihara, a UNESCO World Heritage Site. It was the second largest Buddhist monastery south of the Himalayas in the 8th century. In its prime time, monks from all over the world used to come here for higher education. It was one of the best Buddhist monasteries in the world
at that time. All right, let's move on to Rangamati. Rangamati is a district of the Chittagong Hill Tracts area. The main reason to visit this place is to check out the wonderful Cacti Lake. It is a naturally beautiful man-made lake surrounded by वाओ यार क्या सीन है, in Rangamati जबरदस्त, is to enjoy a boat ride बहुत on खूबसूरत Cacti नेचुरल Lake ब्यूटी। for the day and enjoy the delightful views. Rangamati is also home to many tribal groups. You can visit their handicraft market here to buy some fine quality handmade fabrics. There is also a Buddhist monastery called Rajban Bihara, which is also worth visiting. Keep in mind that if visiting Rangamati and Bandarban in Chittagong Hill Tracts, you will require special permits as a tourist that are not possible to get on your own. So it would be best to book a tour company. And at number 3 today, we have Srimangal. Srimangal is the capital of Bangladesh, located in the northeastern part of the country. Here you'll find lush green tea gardens surrounding you. This is actually one of the few places in the country where you can look around and feel like you are in complete peaceful solitude. Sounds beautiful. Cycling through the trails inside the tea plantations, visiting the Lawakara कितनी National प्यारी Park, प्लेस है यार, and बहुत also the नेचुरल Dhaka ब्यूटी यार, waterfalls are जबरदस्त all ग्रीनरी, highly recommended in this कमाल है, area. You can माशाल्लाह से easily बहुत spend a few खूबसूरत है। days here बहुत खूबसूरत, reconnecting with nature. And we've already mentioned it a few times in our video, but चिटागोंग हिल Chittagong makes it to number 2. बिल्कुल, चिटागोंग की The hills Chittagong Hill बहुत Tracts प्यारी हैं area और is काफी Hill actually a tracts। beautiful place full of charming hills. जी। It is home to many tribal groups of Bangladesh, and this is often known as the best site for adventurous travelers. You can trek deep into the hills for many days here as long as you have permission from the local authorities. So be sure to get that. You can also meet different tribal groups in this region and observe how they live. One of the most beautiful rivers in Bangladesh, called the Sangu River, is also located in this area. A boat ride on the river during the monsoon season is said to be quite an amazing experience. And up at number 1, we have the Sundarbans mangrove forest. Sundarbans is the largest mangrove forest on earth and a united मैंग्रोव फॉरेस्ट है कोई, located in between Bangladesh and India. It is home to the last remaining Bengal tigers in the world and other diverse wildlife as well. Visiting Sundarbans is a tranquilizing experience, and exploring this forest promises a very memorable trip. Keep in mind that visiting Sundarbans mangrove forest will not be possible on your own. You will need to book a tour that operates in Bangladesh, as it requires getting permits from the forestry department. All right, friends, that brings us to the end of today's video on 10 best places to visit in Bangladesh. Now, of course, it is always hard to choose just 10 places, as there are so many wonderful things to see and do in Bangladesh. So if you would like me to make a part 2 to this video with even more great places to visit in Bangladesh, let me know in the comment section below. Now, before you go, don't forget to show us the love by liking, subscribing, and जी, तो इनके चैनल को भी लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बहुत ज़बरदस्त आज की वीडियो थी यार। और वैसे तो बांग्लादेश में जो सिटीज़ हैं वो बहुत कमाल के हैं, और वहाँ पे हर सिटीज़ में जो है विजिट करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसी हर मुल्क की कोई जगह होती हैं जहाँ पे सिर्फ जो टूरिज्म के लिए बहुत फेवरेट होती हैं और बेस्ट होती हैं, और अगर किसी ने मतलब कोई विजिट करना हो तो लोग उसको जो है वो मशवरा देते हैं, यार आप फलां जगह पे विजिट करें, टॉप ऐसी जगह चुन लेते हैं जहाँ पे जाना चाहिए, जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी होती है, जहाँ पे आपको एक अनोखी मतलब जो है वो जगह देखने को मिलती हैं, मतलब अनोखी चीजें भी होती हैं, तारीखी हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं, नेचुरल ब्यूटी होती है वहाँ पे, और जो आपने पहले नहीं देखा होता है, यूनिक चीजें जिसे कहते हैं वो होती हैं। तो आज की जो वीडियो थी उसमें भी वैसे ही हमें कुछ देखने को मिला, और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा बांग्लादेश में देखा है, जिसमें यार सिलेट का तो नाम वैसे ही बड़ा पता है कि यार वो तो बहुत खूबसूरत शहर है यार, क्योंकि उसमें तो लेक्स बहुत खूबसूरत है, वो बहुत जबरदस्त है। और उसके अलावा वहाँ पे एक फॉरेस्ट का जिक्र हुआ था, सुंदरबैंस फॉरेस्ट कोई था, और वो बड़ा खूबसूरत देखने में लग रहा था यार, और मतलब यार वो एक अलग ही मुझे लग रहा, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई साउथ अफ्रीका का कोई जंगल जैसे होता है, मतलब वहाँ पे वाइल्ड के लिए, और मतलब मेरे ख्याल से कि शायद वो सिर्फ वो जानवरों के लिए ही है फॉरेस्ट, मेरे ख्याल से जिस तरह वो दिखा रहे थे ना, बिल्कुल।
तो बाकी वो ये था कि चिटागोंग के जो हिल्स हाँ, वो हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी चिटागोंग पे, उस पे भी हिल्स उन्होंने दिखाई। चिटागोंग में जो था वो शायद एक प्लेस आई थी जो हिल थी, वो वहां पे बहुत खूबसूरत थी यार, ऊपर से इतनी ऊंचाई पर फुल ग्रीनरी थी उसके ऊपर यार, तो मतलब देखने वाली जगह थी। और ये वही प्लेस का मेरे ख्याल से जिक्र हुआ, अगर हम गलत हैं तो उसके लिए सॉरी, बट आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि ये वही क्या जगह थी, क्योंकि वो जगह हमें बहुत पसंद आई थी यार। और वो ब्रिशल वो तो वैसे ही बड़ी जबरदस्त जगह है, सादिया का व्लॉग में देखा था। फिर उसके बाद सबसे जब नंबर 10 वीडियो का स्टार्ट हुआ था, पोथिया वो एक जगह है, वो भी बड़ी जबरदस्त हमें लगी। और उसके अलावा जो था हमने गौर, वहाँ वो एक बड़ी एक यूनिक मुझे प्लेस लग रही थी। हाँ, वो बड़ी जबरदस्त प्लेस लग रही थी। तो गाइस आज की जो वीडियो थी बहुत जबरदस्त, वो रंगामाती लेक, वो लेक बड़ी खूबसूरत यार, वो एक उसमें वो जो बोट वाला सीन था यार, बोट वहाँ पे शायद बुकिंग करवाते हैं लोग, स्पेशल टूरिस्ट जब जाते हैं, वो बहुत कमाल का था यार। वो प्योर नेचुरल लग रहा था, नेचुरल ब्यूटी यार, वो कमाल की यार। वो बांग्लादेश की कोई भी वीडियो देख लो यार, हमें माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है। अब बांग्लादेश में आप सिटीज में देख लो तो वहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, तो ऑब्वियसली जब आप इस तरह के जगहों पे जाएंगे जहाँ पे टूरिज्म की जगह है, वो तो यार मतलब आउट क्लास होगी। रियल में देखने में और वीडियो में देखने में बड़ा फर्क आ जाता है यार। वीडियो में इतना अच्छा लग रहा था, रियल में और ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें हमारे चैनल को। तो अगर आप किसी मजीद अच्छी वीडियोस पे रिएक्शन देखना चाहते हैं, आप उसका लिंक जो है कमेंट सेक्शन पे हमें सेंड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें आप सेंड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।